हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल दुबे और आप देख रहे हैं वाइनी टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, देयर करंट ग्रोथ, देयर फ्यूचर स्कोप एंड मच मोर। तो चलिए शुरू करते हैं। द फिफ्थ वन फ्रॉम द लिस्ट इज जावा। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो कि बहुत सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजन वाई इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय मैनी बिग कंपनीज इवन टुडे। बहुत सारी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस भी जावा के थ्रू बनाई गई हैं, बट येस जावा इज अ बिट डिक्लाइनिंग इन पॉपुलरिटी इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एज वी कैन सी इन द गूगल ट्रेंड्स। एंड वाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक कॉटलिन जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी जॉब्स एक जावा डेवलपर को ऑफर की जाती है। और अगर हम बात करें एक जावा डेवलपर की एवरेज सैलरी की इंडिया में, तो वो 4.5 लाख रुपये अकॉर्डिंग टू payscale.com। The fourth one from the list is C#. It is a simple, modern and object-oriented language, very similar to Java. And अगर आप familiar हैं C, C++ या Java से, so it will be very easy for you to try your hands on C#. C# को बहुत सारी fields में यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेब एप्लीकेशंस, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट या फिर वेब एप्स। और अगर हम बात करें एक एवरेज सैलरी की C# डेवलपर की इंडिया में, so it will be around 4 lakh according to payscale.com. The third one from the list is SQL. Now some of you will say that it is not a programming language, but ultimately it doesn't matter. It stands for Standard Query Language. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और इसे सीखना ही चाहिए, बिकॉज नो मैटर व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू गोना वर्क विद, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है या आपका ड्रीम है एक वेब एप्लीकेशन बनाना, सो यू मस्ट हैव टू डील विद द डेटा। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द डेटा, आपके पास एक बेसिक SQL नॉलेज तो होना ही चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. If you post on any social media platform like Facebook or Instagram, that data will be saved somewhere there. And if you log back in, that post is still there, it's saved in the database, and that's how SQL works. And I think it's a very important language to learn अगर आप backend developer बनना चाहते हैं या फिर full stack developer बनना चाहते हैं। और अगर हम बात करें इसकी एवरेज सैलरी की इंडिया में, so it will be around 4 lakh according to payscale.com. The second one programming language from the list is Javascript. It's an amazing programming language. और अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, then you probably need to learn JavaScript. JavaScript बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, और अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, then JavaScript will help you in the best possible ways. There are hundreds of frameworks and libraries like Angular, React, Vue.js and many others, and the best part of it is every browser runs and supports JavaScript. And I think it's a must-know tool if you want to do something in web developing. और अगर हम बात करें एक एवरेज सैलरी की एक जावा डेवलपर की इंडिया में, then it will be around 5 lakh according to payscale.com. And the number one programming language from the list is Python. Python because firstly it's a general purpose programming language that can be used for many different things. Python बहुत ही पावरफुल yet simple लैंग्वेज है, और बहुत सारी और बहुत बड़ी लैंग्वेजेस Python के थ्रू बिल्ड की गई हैं. Like Google is built off of Python, YouTube is built off of Python, Reddit, COURSERA, Dropbox, Instagram and many others. The list goes on and on. Python has many frameworks like Django or Flask that supports data science applications. बहुत सारे real world projects इसके थ्रू बनाए गए हैं, like self driving car, airline route planning or in the gaming industry and much more. And the reason why Python is getting much popular is because of data science. Data science is getting much popular over the last couple of years. And with the help of Python, many machine learning algorithm and automation is being done. And Python is the number one on the list because it is very beginner friendly. And if you want to start programming, Python is the best option to start with. This is it from my side. If you like this video, give it a thumbs up. Comment down below if you think that any other programming languages like PHP, R language or any newbie programming languages like Swift should be in this list, and why is it so? Hit that red subscribe button and don't forget to hit the bell icon to get the freshly brewed content. See you for the next time. Bye bye.